Hi everyone. We on the behalf of entire FinTram team, we would like to welcome you to the live webinar. We should start. Which is more to do with the which is more to do with the fact that we as the BCom pursuing students, or we as the BCom holders, what can we do in addition to what we really have in terms of reaching out where we can reach with the qualification like ACCA. तो आज हम बात करेंगे ACCA as a qualification की. आज हम बात करेंगे ACCA आपको कैसे help कर सकता है while pursuing your BCom, and of course even after BCom अगर आप ACCA को pursue करते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं, what would be your path, कैसे आप start करेंगे, and of course what all you would need to do. And guess what, there is a very recent change that ACCA has come up with, which is to do with the fact that now the BCom pursuing students and BCom qualified students are getting various exemptions in ACCA. So uske bare mein bhi samjhenge, and of course we'll understand more about how this qualification can really help you reach where you can reach and where you should reach. So that's pretty much, guys, what we intend to cover. By way of introduction, my name is Pankaj Dhingra, and I'm a qualified chartered accountant and a CPA from US, and of course has been ACCA faculty for a long time. And I have my colleague with me, Disha. Disha, do you want to introduce yourself and then we can kickstart? Sure. Hi everyone, I am ACCA Disha Chauhan. I've been an ACCA member since many years now. I'm also a BCom honor graduate, and I've worked in various Big Fours, and I'm also a lead faculty. I teach various ACCA subjects at FinTram Global. Good. Welcome, guys. Welcome all, and thanks for joining in, Disha. I think it is always a pleasure to have you here. So we'll kickstart with with what we have in store today with reference to the things that we really wanted to cover. So you can you can start off, Disha, and maybe we'll start off from the basics and then we'll move on. Sure. Let me know once the screen is visible. Yeah, it's visible now. Maybe you can go on the presentation mode. Yeah. All right. Good evening, everybody. Welcome to our webinar. Today, of course, we will get a brief idea about what is ACCA and why, as a BCom student, it is really important for you to pursue ACCA, to think on those lines if you really want to work in all those Big Fours and global MNCs, whether in India or outside India. So firstly, let's just start off with understanding that what exactly ACCA is. So ACCA is your... Sorry, just to, I just want to give some colors to it. Guys, ये चीज तो हमें बिल्कुल पता है, और I'm sure 100% पता है that सिर्फ BCom is not gonna be helpful to us, because सिर्फ BCom से कुछ नहीं होने वाला है. We will certainly not reach where we can reach and where we should reach. So हमें BCom से हटके या BCom के in addition में हमें कुछ तो extra करना है. And of course there are various routes, there are various qualifications, which you can really pursue, and एक qualification जो सबके मन में आती होगी और सबके मन में आती है कई बार is nothing but the chartered accountancy. So while we are not trying to differentiate CA versus ACCA over here, we really want to talk on as to what the ACCA is. But Disha, I just wanted to, call it out that we should be spending at least, a couple of minutes in terms of, explaining the differences, how ACCA is different from CA and so on and so forth. So, अगर कुछ ऐसे students हैं जो इस बारे में जानना चाह रहे हैं या सोचना चाह रहे हैं या उन्हें कोई help चाहिए in terms of taking the right decision, they can also hear you out and of course take that forward. Sure. So ACCA, of course, stands for your Association of Chartered Certified Accountants. Now this is a global professional body, and it is of course offering qualifications for whether you're finance and accounting professional. Now, Jesse, we have CA in India. There is ACCA. Majority it has come from the UK, but of course, ACCA is globally recognized in over 180 plus countries. So, ऐसा नहीं है कि आप ACCA करके सिर्फ, some people think that they would be only able to work in the UK or anything like that. ACCA is recognized whether it's UK, India, Europe, Singapore, UAE, Dubai, almost everywhere. Only in US, I would say,
they usually prefer CPAs, but other than that, everywhere ACCA is recognized, and of course ACCAs are hired. If we do a sort of a difference between कि भाई ACCA और CA में फिर major difference क्या है? Firstly, it's about your flexibility. Now, when you do CA, as many of you might know, that CA का pass rate एक तो बहुत कम है. Not many people are able to complete their chartered accountancy. Now, the major reason is not कि भाई CA बहुत tough है और ACCA easy है. So this is a myth. If you're thinking कि ACCA is going to be very easy or a cakewalk, that's not right. जितनी मेहनत और पढ़ाई आपको CA में करनी है, उतनी ही आपको वैसी ही पढ़ाई आप ACCA में ही करोगे, but the only difference is of flexibility. Now CA में क्या है, as you might know that grouping system है कि आपको भाई ग्रुप में पेपर्स देने हैं, एक भी पेपर में आप फेल हो गए तो आपको फिर से पूरा ग्रुप देना होगा. But there is nothing like that in ACCA. In ACCA आप एक पेपर एक टाइम पे दे सकते हो, and once you clear that paper, you can move on to the next. In any case, if you don't clear that one paper, you will just have to repeat that paper. ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि ACCA में कितने levels हैं. So it's not like that कि अगर आप स्किल लेवल का आपने कोई पेपर फेल कर दिया और लेट्स से आपने एक सेटिंग में 2 दिए तो आपको फिर से दोनों पेपर देने होंगे. नहीं, हर पेपर अपना इंडिविजुअल पेपर है. आप जैसे जैसे क्लियर करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे. अगर आप कोई पेपर नहीं क्लियर करते हो तो आप उसको आराम से नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो, बट आपको सिर्फ वही पेपर देना. Now this is the major, I would say, benefit जो कि ACCA ऑफर करता है as opposed or compared to CA. CA में ऐसा नहीं है. अगर आप ग्रुप में फेल हो जाते हो तो आपको पूरा ग्रुप फिर से देना होगा. तो आपको दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होता है. सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स इट लिटिल मोर कम्बर्सम, एंड दैट इज व्हाई CA इज समथिंग जो काफी बच्चे शुरू करते हैं, बट आप देखोगे डिफरेंट स्टेजेस में स्टूडेंट्स टेंड टू लीव. कुछ बच्चे इवन IPCC तक क्लियर कर जाते हैं, but then they actually start pursuing ACCA because of course ACCA में आपने जो पेपर्स IPCC में क्लियर किए हैं उसको भी एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपको थोड़े एग्जेम्पशन भी मिलते हैं. तो ये सारी बेनिफिट्स भी होते हैं. So coming back to ACCA, of course, this was founded in 1904. So ये बहुत पुरानी professional body है. ऐसा नहीं है that it has just started. Of course, now in India and other countries, it has become very popular, and that's why you would hear a lot more about it. But it has been around for so many years. It has around over 230,000 members across the globe and 530 plus students, 30,000 students. And like I said, it is recognized in over 180 plus countries. So many people then feel that, oh, agar main India mein hu, to they would just prefer that main Indian CA karu. So Indian CA mein aap Indian accounting standards padhte ho, right? But ACCA में आप पढ़ते हो IFRS, जो कि है International Financial Reporting Standards. Now, बहुत सारी कंपनीज, वेदर इट्स योर यूरोप और इवन UK, सिंगापुर, दुबई, बहुत सारी कंपनीज जो है जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है आज की दुनिया में, आज के जमाने में, दे यूज IFRS. Many countries in the globe have adopted IFRS. So obviously उनका चाहे ऑडिट हो रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन हो रहा है, उसके लिए दे वुड ऑब्वियसली वांट समवन जिसको इन IFRS की नॉलेज हो. सो ACCA आपको वो नॉलेज देता है. सो इंडिया में भी आप किसी भी MNC में अगर काम करो, वेदर इट्स योर बिग फोर, चाहे वो KPMG हो गया, EY हो गया, या फिर और कोई बड़ी कंपनी हो गई, चाहे बार्कलेज हो गई, JP Morgan हो गया, ना ये सारी ग्लोबल कंपनीज है. इन सबके जो ऑफिसेज हैं बहुत सारी कंट्रीज में, वेदर इट्स योर अगेन UK, यूरोप एंड so on and so forth. So these countries, since they have offices in those countries, they prefer or they want people जिनको IFRS की knowledge हो. तो आप इंडिया में भी रह के इन कंपनीज में काम कर सकते हो, एंड आप चाहे वो आप ऑडिट फील्ड में जाओ, टैक्स में जाओ, या आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाओ, अश्योरेंस में जाओ, आप ये सारे काम कर सकते हो बिकॉज आपने ये ACCA में पढ़ा है, एंड ग्लोबली ये चीज एक्सेप्टेड है, राइट? IFRS इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. The only difference I would say is, of course, इंडिया में रह के आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है as an ACCA, but I don't think that is a big thing. I mean, to be very honest, signing authority से ज़्यादा tension ही आती है, and more I would say problems ही. So it's actually better to just do the work and enjoy the work and learn these things. And IFRS, like I said, is globally recognized. बहुत सारी countries ने adopt कर लिया है इसको, and that is what they use.
So people around the world, that's why they prefer to hire ACCAs, चाहे वो audit के तरफ हो या फिर अपनी company में, to prepare those financial statements as per those relevant IFRS. Now, so like I said, it is a prestigious and globally recognized professional qualification जो कि आपके लिए बहुत सारी career opportunities and avenues open करता है. So it's not just accounting. You know, people think ACCA कर लिया तो बस आप accountant ही बनोगे, आप accounting में ही काम करोगे. नहीं. In this presentation also we'll see आगे जाके कि क्या और career opportunities है apart from just your core accounting. Now let's talk about why pursue ACCA. ACCA क्यों करें हम? कोई भी क्यों करे? So like sir said कि BCom is not enough. Maybe few years back the line it was something that BCom के बाद आपको job मिल जाता था and आप लगे रहते थे 5 साल 6 साल बाद and उसके बाद you might reach a position. But तभी I would say many people had to upskill. You know, BCom was never enough. I myself am a BCom honors graduate. And मुझे definitely, because I did BCom from a good university, Christ University Bangalore, I did get a job after BCom because campus placements है. एक तो बहुत सारी colleges में ये option नहीं होता है. अगर आप बहुत अच्छे college से BCom नहीं कर रहे हो, whether it's your DU or the top colleges, then campus placement होना भी बहुत मुश्किल है. Even though I got a campus placement, I realized as soon as I started working in the Big Four, I realized यहाँ अगर टिकना है, यहाँ अगर ऊपर पहुंचना है, आपको कुछ और करना ही पड़ेगा. You know, when they were coming for hiring also in the orientation, they did specify that you have to pursue something like ACCA or something like that. Because in companies में आप ऊपर, you will not grow up the ladder if you don't do any of these qualifications. So when I joined, I quickly realized that I have to do a qualification because I had joined audit department. तो मुझे था कि उससे related I have to do something if I want to grow, if I want to, go at the top at some day. Because if you just, अगर आप घुस भी गए BCom करके in any of these companies, and this I'm saying, like मैंने तो पढ़ाई college कई साल हो गए मुझे. आज के ज़माने में तो I would say maybe just after BCom you might not even get placed so easily because everybody is doing something or the other. Everybody is upskilling. So in this day and age, because अब बहुत competition हो गया है and the things are also available easily, companies expect the आप कुछ और भी extra करोगे. If you're just going with a BCom, they might actually reject you. So ACCA जब मेरे को पता चला कंपनी में that most of these companies prefer ACCAs and they actually promote कि आप ACCA करो and काफी companies तो reimburse भी करती है and बहुत सारी चीजें provide करती है benefits अपने students को because they want that their workforce is qualified. They are qualified accountants in their as such पूरे job के employees है उसमें. So I realized that I have to do something if I want to grow and मैंने जॉब के साथ ही ACCA स्टार्ट कर दिया. The only thing is I definitely feel कि काश मुझे उस टाइम पे पता होता तो मैं अपने BCom के साथ ही ACCA कर लेती. So I would have saved those years, right? So if you are let's say BCom first year student or a second year student और अगर आप अभी start करो, so by the time you finish BCom you would almost finish your ACCA and if you're doing at a good speed आप finish कर भी जाओगे. So imagine you are graduating not just with BCom, with ACCA. Imagine how many doors that would open, not just in your big fours MNCs, but आप अगर काफी लोग का aim होता है कि बाहर जाके काम करना इंडिया से, आप वो भी फिर कर सकते हो. सिर्फ BCom करके if you think that मैं बाहर चले जाऊंगा या मैं बाहर जॉब कर सकता हूँ, so it's actually impossible. But आप ACCA अगर कर लो, then it will give you this opportunity or this chance. Many students think कि okay BCom कर लेता हूँ, बाहर जाके I'll take a study loan, I'll do some course there and फिर I might get a job. But why do you want to waste so much of money and time when you can do ACCA along with your graduation? You can save that time and money also. So let's talk about that why you should pursue ACCA. Of course, like I said, global recognition. सिर्फ 1, 2, 10 countries में नहीं, it is recognized in over 180 plus countries. Everybody around the globe knows ACCA क्या है, they value ACCA. फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट लाइक CA कि भाई ग्रुपिंग सिस्टम है, एक पेपर फेल हो गए तो पूरा ग्रुप दो. नहीं, यू हैव टू ग्रेड 1 पेपर एट अ टाइम. आप उसको पास करो. आपको किसी सिटिंग में एग्जाम नहीं भी देना है, उसका भी आपको ऑप्शन है. आपको कौन सा पेपर किस लेवल पे देना है, उसका भी ऑप्शन है. तो ये सारे ऑप्शंस जो है EC से आपको देता है, which गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ
not many professional qualifications give such flexibility. ज्यादातर professional qualifications जो हैं कोर्स तो मुश्किल होता ही है, ऊपर से इतने रूल्स डाल देते हैं that it becomes even more difficult to clear your exam. But with ACCA, there's no such thing. Of course, ACCA is difficult because it is at the end आप chartered accountant ही बन रहे हो. But क्योंकि ये flexibility वो offer करता है, तो आप पे उतना pressure नहीं रहता है. Now, if you are planning to do with your BCom, so imagine, let's say, आपके मार्च में कोई कॉलेज के एग्जाम है एंड ACCA में मार्च की भी एक सिटिंग होती है. Now you can decide कि भाई मेरे कॉलेज के एग्जाम है, so let me not give in March and I will give in June sitting ACCA का एग्जाम, and मैं मार्च में सिर्फ अपने जो है BCom के कॉलेज के एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर. So this is something that will give you a lot of flexibility. तो आप पे वो प्रेशर नहीं रहेगा कि ओ विद कॉलेज में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, विद जॉब में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी अगर यू आर ऑलरेडी अ BCom ग्रेजुएट. तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप जो है ये कोर्स काफी स्मूथली और इजीली एट योर ओन पेस कर सकते. नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. बहुत लोगों को अगेन ये लगता है कि ओ इसी से यूके का कोर्स है, पाउंड में पे करना होता है तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा. फिर अगर आप कंपेयर करो विद सीए, बिकॉज सीए में भी आप कई बार बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दें, चाहे वो कोचिंग फीस हो, आपको फिर बार बार एग्जाम देना हो उसकी फीस, ये सबको कंसिडर करते हुए the cost actually comes to the same line only. And seeing that ये एक professional qualification है जो globally recognized है, I would say this is very cost effective. क्योंकि अगर कोई MBA भी करने जाए किसी अच्छे कॉलेज से, it's not gonna cost less than 20 lakh or so, right? If you're doing from a really good college, it will be a lot more than that. But ACCA, if you compare, you are getting a professional qualification here at a very good price. So it is definitely cost effective. It is a well-structured program, no doubt in that. ACCA में आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपको actually life में useful होगा. When I was working in KPMG, I was also studying for my ACCA exams, audit paper के लिए. I realized that whatever I'm being taught, this is something that I actually do at my workplace. So आपको पढ़ने का भी तब मन करता है. You get more interested because you can see the connection. स्कूल्स में क्या होता था, हम कभी कोई टॉपिक पढ़ते थे, हमें लगता था यार ये तो हम कभी लाइफ में यूज नहीं करेंगे. लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि मैं संस्कृत लाइफ में कहाँ यूज करूंगी या मैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करूंगी, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. बट विद ACCA दैट नेवर हैपेंड बिकॉज इट इज सच अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. जो भी इसमें सब्जेक्ट्स है यू कैन एक्चुअली सी उसकी रेलेवेंस, एंड जब आप एक्चुअली वर्क प्लेस में जाके काम करते हो आपको दिखता है दैट यस ये करना बहुत जरूरी था एंड ग्रेट दैट हम नहीं किया. ये नॉलेज आज के जमाने में हमें ये चाहिए ही चाहिए. देन ऑफ कोर्स दिस सर्टिफिकेशन ऑफर्स मेनी पॉसिबिलिटी. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ACCA करना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग. आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप एडवाइजरी में जा सकते हो, आप अश्योरेंस में जा सकते हो, आप टैक्स में जा सकते हो, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई चीज आपने आपने लेट्स से आप ऑडिट में करो और आपको उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो स्विच करना भी इजी होता है बिकॉज आपने ACCA किया, आपने वो सारी चीजें पढ़ी, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी पढ़ी है, आपने टैक्स भी पढ़ा है. तो अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट डिविजन में काम करना है, it will become very easier for you. Same thing happened with me. I started with the audit, but actually after some time I realized that I want to do something different. So I shifted to financial accounting, that too in another big four. So ये switch करना बहुत easy था because I was an ACCA. अगर मैं ACCA नहीं होती तो you start from the bottom. आप फिर से आप दूसरी कंपनी में जाओ और आप एकदम नीचे से शुरू करते हो because they assume कि आपको तो obviously इसकी knowledge नहीं है. But since I was an ACCA, this didn't happen with me. Then continued professional development. ACCA is a professional qualification and most of professional qualifications में CPD होता है. That is, even once you become an ACCA member, every year you have to do some sort of CPD to say that, okay, I am being, up to the, like मुझे सब पता है क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे जो भी काम से related मुझे knowledge चाहिए, I am up to date with that. So this is also something which is great because everything is changing these days, right? Technology is changing, everything is changing. So it becomes important that आप up to date रहें कि क्या क्या changes हो रहे हैं so that you stay relevant and you don't become irrelevant. All right, moving on to benefits for BCom students. Now, अगर आप BCom student हो तो आपको क्यों start कर देना चाहिए ACCA? इसके क्या फायदे हैं? Now, दो कैटेगरी है इसमें. एक तो वो BCom students जो कि अभी BCom कर रहे हैं, उनको मिलते हैं कंडीशनल एग्जेम्पशंस.
एंड देन देयर आर दोज बीकॉम स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलते हैं, बट दोज आर कंफर्म्ड एग्जेम्पशंस. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. पहले तो आपको ये बताऊं, पहले ना बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 4 एग्जेम्पशंस होते थे, विच इज बीटी, एमए, एफए एंड लॉ. बट रिसेंटली, एक्चुअली फ्रॉम 8 अगस्त 2023 ओनली, एसीसी ने ये रूल अब स्टार्ट किया है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 4 पेपर्स, टैक्स पेपर को भी एक एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है, जो कि एक स्किल लेवल का पेपर था. नाउ ये ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज आपको अब और कम पेपर देने, सो आप और फास्ट ये चीज क्लियर कर सकते हो. अब इसके लिए कंडीशंस क्या हैं वो समझ लेते हैं. तो उन स्टूडेंट्स जिनको कंडीशनल एग्जेम्पशन अवेल करनी है, जो कि अभी बीकॉम परस्यू कर रहे हैं, उसके लिए ये कंडीशन है कि आप पहले तो अभी करेंटली परस्यू कर रहे हो बीकॉम फ्रॉम एनी ऑफ द एक्रेडिटेड स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी. इसकी एक लिस्ट जो है ACCA ने पब्लिश की है, एंड एनी विच वेज ACCA हैज एन एग्जेम्पशन कैलकुलेटर, जिसमें आप आप गूगल पे लिख सकते हो ACCA एग्जेम्पशन कैलकुलेटर, आप जाके चेक भी कर सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी आती है कि नहीं. Now, इसके लिए another thing which is important is that आपको जो ग्रेजुएशन है वो between 1st January 2023, यानी कि इस साल का 1st जनवरी से 31st दिसंबर 2029 के बीच में कंप्लीट हो रहा हो. एंड आपको पर जो रजिस्ट्रेशन है ACCA में, वो अगर आप 8 अगस्त 2023 के बाद करोगे, तभी आपको ये कंडीशनल एग्जेम्पशंस मिलेंगे. 8 अगस्त क्यों है ये डेट? बिकॉज अभी ये अनाउंस किया गया है बाय ACCA. लाइक आई सेड, इससे पहले सिर्फ 4 एग्जेम्पशंस थे. अब ACCA ने बीकॉम स्टूडेंट्स को और एक बेनिफिट दिया है कि अगर आप 8 अगस्त के बाद रजिस्टर करते हो और आप परस्यू कर रहे हो बीकॉम फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज, यू विल गेट वन मोर पेपर एग्जेम्प्टेड, जो कि अब टैक्स पेपर है. एक बार जब आप एज ए स्टूडेंट अपना बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, तब ये जो कंडीशनल एग्जेम्पशन है ये कंफर्म हो जाएंगे. एंड जो फीस है इन कंडीशनल एग्जेम्पशंस की, वो एक्चुअली नील यानी कि 0 होगी, बट ओनली व्हेन यू रजिस्टर फॉर योर ACCA थ्रू एन अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर. फॉर एग्जांपल, FinTram Global इज अ गोल्ड अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर. अगर आप अपने आप जाके ACCA में रजिस्टर करो, तब आपको ये एग्जामिशन फीस देनी पड़ेगी, विच वुड बी अराउंड 50 to 60,000 rupees. But if you register with a gold or any approved basically learning partner, तब ये एग्जामिशन जो फी है फॉर दिस कंडीशनल एग्जामिशन, ये नील हो जाती है, आपको ये फी नहीं देनी पड़ती. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ऑब्वियसली वो 50,000 60,000, आई एम श्योर nobody wants to pay that to ACCA or waste that, right? So it's always better to go through an approved learning partner to एक तो हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऊपर से आपको ये नील फीस देनी पड़ेगी फॉर अवेलिंग दीज 5 कंडीशनल एग्जेम्पशंस. नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे इन कंडीशनल एग्जेम्पशंस के लिए? आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो देना ही होगा, 12th मार्कशीट, एंड आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट भी चाहिए होगी. नाउ ये जो आप नॉर्मल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, दैट विल नॉट बी इनफ. इट हैज टू बी either physically signed or digitally signed. Sir, do you want to add something? No, I think only one thing that I wanted to add was on the prior slide, which is, getting the 5 exemptions. Guys, ये बहुत बच्चों की इच्छा रही है शुरू से, जब पहले 4 exemptions थी तब भी, और अब जब 5 exemptions हैं तब भी, कि और बहुत बच्चों के सवाल भी होता है कि सर क्योंकि मेरे 5 एग्जाम्स एग्जम्प्ट हो जाते हैं, तो क्या है मुझे आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द फर्दर सब्जेक्ट्स ऑफ ACCA, क्या वो मुझे इश्यूज रहेंगे या नहीं. एक पॉइंट बच्चे जो विच इज वी एज FinTram ट्रूली बिलीव्स इन इज दैट एग्जेम्पशंस हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं अगर उस बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग नहीं है. तो सो दे मे वांट pursue these 5 subjects also in case they want to build a strong base for their ACCA per se. But बच्चे अगर आप in case इन exemptions को लेते हैं और आपको लगता है बेटा कि मुझे अभी भी हेल्प चाहिए सर इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, so one thing that FinTram really provides to all of their registered students is that even if आप इन एग्जाम्स की exemption लें, if you will reach out to us, and you have registered with us and of course taken the pack for registration for us, what we will do is that we will be anyway providing you these classes
available for you to review and to look out to and into it. So these classes will be given to you irrespective of the fact कि बच्चे आपने एग्जाम देना है या नहीं देना है, ये क्लासेस आपको दी जाएंगी ताकि आपका बेस अगर कहीं पे कमजोर रह भी जाए किसी भी कारण से तो वो समस्या आपके जीवन में ना आए. आप इन सेशंस को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के एटलीस्ट वो गैप कवर अप कर सकते हैं. So that is something that FinTram really offers to all of their students around the globe. And as Disha rightly mentioned, we are the gold approved learning partners, servicing students around the globe in terms of, giving all of these courses, round the clock. So, in case you have any questions, और एक क्वेश्चन और भी कई बच्चों के मन में आता है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी ये है, मेरा कॉलेज ये है, तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं है, ACCA की वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ. So, we will be providing you a number towards the end. You can certainly reach out to FinTram, and FinTram is more than happy to pick up your candidature and tell you कि बच्चे आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी. और ये जो 5 exemptions का benefit है, ये हम will be more than happy to provide you ताकि आपको कोई cost incur ना करनी पड़े और आप you can straight away go and sit for your exams. Over to you, Disha. Yeah. So like I said, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आपको ये कंडीशनल एग्जेम्पशन अवेल करना. तो ये तो हो गया कंडीशनल एग्जेम्पशन. बट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, फॉर देम दे विल गेट कंफर्म्ड एग्जेम्पशंस अगेन फॉर दीज 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड कि वो स्टूडेंट ने ऑफ कोर्स अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया है and they have registered after 8th of August 2023 because like I said, यही वो डेट है जब ACCA ने अनाउंस किया कि अब से वो 5 exemptions देंगे. So that is important thing to note. अगर आपने पहले कर लिया है registered, so you might not get these exemptions. So अगर आपने BCom complete भी कर लिया, so अगर आप already BCom कर रहे हो तब तो आपको you just have to get it checked कि आपकी यूनिवर्सिटी आती है उसमें नहीं आती है. Like sir said, we'll do provide a number at the end. आप हमारे you can get in touch and understand कि कैसे अप्लाई करना होगा. And अगर आपने BCom कर लिया है, then all you will have to do is register after this date and you will then be able to get these 5 papers exempted. In fact, registration for the upcoming batches are open. Many of the BCom folks have already registered for varied courses. So in case guys, you have already done your BCom, या आप कर रहे हैं, so do reach out to us. We can provide you the maximum benefit of the exemptions that is available to you. And of course, since the cost that will be on which this will be provided, which will be, it will be almost nil because you won't be, needed to pay anything in relation to these exemptions. It's a big time saving for you. So if you're thinking about it, now is the time. Yes, exactly. Coming to the ACCA syllabus. Now, ACCA में 3 levels होते हैं. We have your applied knowledge, applied skills, and applied strategic professional. Once you clear one level, आप then दूसरे level पे move कर सकते हैं. But within a level, आप actually कोई भी order में exam दे सकते हैं. Now, for example, अगर आप BCom pursuing student हो गए या फिर BCom कर लिया आपने, so आपका knowledge level तो पूरा exempt हो जाएगा because इसमें जो BT, MA, FA, like I showed in the previous slide, ये सारे actually आपके exempt हो जाएंगे. आपके skill level से corporate and business law भी exempt हो जाएगा और अब taxation भी exempt हो जाएगा from 8th August जो कि नया rule आया है. So essentially आपको बस ये skill level के remaining papers देने होंगे and आपके strategic level के भी सिर्फ 4 एग्जाम ही देने होंगे. Now skill level के अगर हम बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो performance management में usually you will learn about costing and budgeting. But again ये जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, ये actually applied knowledge level के MA में काफी हद तक covered है. So like sir said कि अगर आपका base strong नहीं है तो हो सकता है आपको इन papers में थोड़ी दिक्कत आए. So इसीलिए if you are studying with us FinTram, like sir said, we will be providing you these courses के videos. So अगर आप exemption avail कर रहे हैं, paper नहीं भी दे रहे हैं, it will be a benefit for you to just go through these courses, these videos, so that जब आप skill level के बाकी exams दे, आपका base एकदम strong हो and then you don't have to worry about कि मुझे कुछ समझ नहीं आता. Then financial reporting is on the lines of यहाँ पे आपको introduction मिलेगा towards your IFRS and basically आप financial statements बनाना सीखोगे, group accounting सीखोगे. Now बहुत हद तक इसका भी जो base knowledge है FA, which is your knowledge level का paper financial accounting में cover होता है. So it's again important कि आपको उसकी भी knowledge हो.
देन ऑडिट एंड अश्योरेंस इज योर प्योर ऑडिट पेपर, जिसमें आपको ऑडिटिंग के बारे में सब बताया जाता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है आपके फाइनेंशियल मॉडल्स हो गए एंड जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह, ये सारी चीजें उसमें कवर होगी। एक बार आपने स्किल लेवल कंप्लीट कर लिया, यू कैन इजीली मूव ऑन टू योर प्रोफेशनल लेवल। तो प्रोफेशनल लेवल में 2 एग्जाम जो है कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को देना है, एंड 2 एग्जाम आप चूज कर सकते हो आउट ऑफ 4। तो जो कंपलसरी एग्जाम है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट फर्स्ट। पहला आ जाता है आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। नो, जो एसबीएल एग्जाम है, इसमें काफी चीजें जो है बीटी आपके नॉलेज लेवल के एग्जाम से काफी चीजें सिमिलर है, काफी मैनेजमेंट की डिसीजन, स्ट्रेटजीज अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो बेस स्ट्रांग हो, आपने गो थ्रू किया हो, सो दैट जब आप एसबीएल पे आओ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो योर बेसिक। तो एसबीएल में अगेन केस स्टडी क्वेश्चन पेपर, जहां पे आपको एक केस दिया जाएगा और आपको एज अ बिजनेस लीडर देन आंसर करना होगा कि कैसे आप कंपनी में वो पूछ सकते हैं कि रिस्क के कैसे डील करोगे, या कंपनी का स्वॉट एनालिसिस और मेनी अदर, देयर आर मेनी मॉड्यूल्स इन दैट। देन एसबीआर इज आपका एफआर, जो आपने स्किल लेवल में पढ़ा उसी का एक एडवांस वर्जन है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। इसमें भी आप अगेन आईएफआरएस ही पढ़ते हो, बट नाउ एट अ मोर आई वुड से एडवांस स्टेज। आपने एफआर में आईएफआरएस कवर किए होंगे, पर आप वही आईएफआरएस और डिटेल में पढ़ते हो। इसमें भी आपका ग्रुप अकाउंटिंग वगैरह सब आ जाता है। देन आपके जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, यू कैन पिक एनी 2 फ्रॉम दीज 4। तो आपका जो आपने एफएम किया था उसका एडवांस एफएम हो जाता है, आपने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया था उसका एडवांस एपीएम हो जाता है। आपने अगर आप लोग को तो वैसे टैक्सेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर आप यू विल गो थ्रू दैट एंड आप टैक्स में इंटरेस्टेड हो, तो आपको अगर एडवांस टैक्सेशन करना है, तब तो आई विल डेफिनेटली से दैट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द सिलेबस, द कंटेंट ऑफ टैक्सेशन एट स्किल लेवल। एंड फाइनली आपका ऑडिट एंड अश्योरेंस का एडवांस वर्जन उसमें आ जाता है, विच इज योर एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस। सो दिस इज योर प्रोफेशनल लेवल, एंड ऑफ कोर्स वंस यू क्लियर दैट, आप बन जाओगे एक एसीसीए एफिलिएट। फॉर टू बी कॉल्ड एज एन एसीसीए मेंबर्स, आपको एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है। दिस इज जस्ट एन ऑनलाइन मॉड्यूल, ऑनलाइन ही आपको करना होता है एसीसीए की वेबसाइट में, वेरी सिंपल। एंड ऑफ कोर्स यू नीड 3 years ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। नाउ अगर आप लेट्स से ऑलरेडी बीकॉम कर चुके हो और आप कहीं जॉब कर रहे हो इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एंड इवन इफ यू नाउ थिंक ऑफ रजिस्टरिंग टू एसीसीए, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस अभी तक है वो भी काउंट किया जाएगा। सो इट्स नॉट दैट आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड फॉर एसीसीए उतने उसके बाद मैं जब भी जॉब करूंगा वही वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, नहीं। एसीसीए आपका पहले का भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेगा, which I think is a very good benefit that they give to students. Now coming to the ACCA एग्जाम्स, कि ACCA एग्जाम्स होते कैसे हैं, कैसे मतलब उनको स्ट्रक्चर्ड होता है कि ऑनलाइन देना होता है, ऑफलाइन होता है। सो ACCA एग्जाम 2 टाइप के होते हैं। एक तो वी हैव आवर ऑन डिमांड सीबीज, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स ही होते हैं, अब पेपर बेस्ड एग्जाम्स नहीं रहे। Now जो आपके पहले 3 पेपर्स है नॉलेज लेवल के और एक स्किल लेवल का पेपर लॉ, इसके लिए आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, यानी कि 365 डेज में यू कैन पिक अ डेट, पिक अ टाइम एंड जस्ट गिव एग्जाम आराम से ऑनलाइन ही। एंड आपको कोई इसमें और वो नहीं करना है कि वो डेट निकालेंगे या इसी से टाइमशीट देगी, नहीं। आपके पास चॉइस है, आपको जब देना है आप ये दे सकते हो। फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स अगेन, अगर आपको एग्जाम्शंस के लिए एनी विच वे एलिजिबल हो, तो आपको ये एग्जाम्स वैसे नहीं देने होगा, तो आपको होंगे फिर सेशन बेस्ड एग्जाम्स, यानी कि सेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। Now, ACCA जो है एवरी ईयर 4 सिटिंग्स करता है, एक तो मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, एंड दे पब्लिश द टाइम टेबल। एंड यूजुअली डेट होती है कि भाई मंडे को लेट्स से फॉर एग्जांपल देर से ऑडिट पेपर होगा, ट्यूसडे को लेट्स से एफएम का पेपर होगा, सो दे विल ओनली पब्लिश द टाइम टेबल। तो आपको ये एग्जाम एडवांस में बुक करने होते हैं अहेड ऑफ योर एग्जाम डेट्स, एंड एक फाइनल डेडलाइन भी बताई जाती है, उससे पहले आपको जस्ट बुक करना होता है, एंड आप आराम से फिर ये जाके आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये दे सकते हो। Now, अप्रोक्सीमेटली एक बार आप एग्जाम दे दो, उससे करीबन 6 वीक्स ही लगते हैं टू गेट द रिजल्ट। ऑनलाइन आपको इसी से रिजल्ट भी भेज देता है, एंड देन यू कैन प्लान एंड डिसाइड कि ओके अब मैं नेक्स्ट पेपर कौन सा दूं। सो ये होता है सेशन बेस्ड सीबीज। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे ही सिटिंग्स दो। लाइक आई सेड, अगर आप बीकॉम कर रहे हो और आपके मार्च में एग्जाम्स हैं,
सो यू कैन जस्ट स्किप दैट सिटिंग। आप जून में पेपर दे दो या आप सितंबर में दो, दिसंबर में दो, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी ACCA दे रहा है कि आपको जिस सिटिंग में पेपर देना है, जितना उस सिटिंग में मे बी आपको 2 पेपर देना है या 1 देना है, वो भी चॉइस आपके पास ही है। कमिंग टू द ACCA फीस स्ट्रक्चर, नाउ ऑब्वियसली कोई भी आप कोर्स करते हो तो उसके साथ एक फीस अटैच्ड होती है, ACCA के साथ भी फीस अटैच्ड है। एक तो आ जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन फी। नाउ जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ACCA का बेस यूके में है, तो ऑल द फीस दैट यू पे इज इन पाउंड्स, एंड आप मान लो 1 पाउंड अराउंड 90 to 100 रुपीस के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। आजकल तो ऑलमोस्ट 100 ही पहुंच गया है। सो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है वो एक्चुअली 30 पाउंड्स होती है, बट अगेन अगर आप FinTram ग्लोबल के साथ रजिस्टर करोगे ये आपको फ्री पड़ेगी। Now, because FinTram Global is a gold approved ACCA learning partner, we are able to provide you these benefits. अगर आप अपने आप जाके रजिस्टर करोगे, आपको वो एग्जामिशन फीस का भी पैसा देना पड़ेगा, आपको ये सारी रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी देनी पड़ेगी। देन एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी होता है जो ACCA चार्ज करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 122 पाउंड, एंड दीज फीस माइट चेंज एवरी ईयर, बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है। But again, with FinTram Global, because we are a gold approved ACCA learning partner, we are able to provide you these benefits that ये आपके लिए free होगी। Then exam fees. Now exam fees is something जो आप directly ACCA को देते हो। So जो ACCA की फीस है जो उन्होंने कोट की है वही आपको देनी होगी। उसमें we can't do anything, we can't really offer anything because ये आप directly ACCA को दे रहे हो, right? And ये vary करती है different level. तो अगर आप knowledge level का एग्जाम दे रहे हो, so it will be around 84 pounds. अगर आप प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हो, इट वुड गो अप मे बी अराउंड 162 पाउंड। सो इस रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली इन दिस रेंज ओनली द एग्जाम फी इज। एंड जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ फी आप इनकर करोगे अगर आप ACCA करना चाहते हो इज योर कोचिंग फीस। यस, आप अगर किसी लर्निंग प्रोवाइडर से पढ़ोगे, एंड इट्स ऑलवेज सेड फॉर कोर्सेज लाइक ACCA, सेल्फ स्टडी या सोचना कि मैं खुद से पढ़ के कर लूंगा इज नॉट रियली अ सजेस्टेड आइडिया, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम होता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू गो थ्रू समबडी जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। एंड एट FinTram Global we have all our faculty are either chartered accountants or ACCA members themselves, so they know एग्जाम में कैसा हो सकता है, क्या सिनेरियोज आ सकते हैं, एंड दे आर एबल टू गाइड यू थ्रू सो दैट आप जब ये एग्जाम दो, फर्स्ट टाइम लाइफ में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एग्जाम दो, you are much more relaxed and confident. And again, coaching fees of course depend karegi from different coaching providers, but I can definitely say this, that FinTram Global is one of the most affordable coaching providers for ACCA out there. And if you don't believe me, you can simply just go to our website and check out our rates, and then आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रही हूँ वो actually सच है। that ये myth है कि लगता है कि वो ACCA की फीस कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव होगी and all of that, which is not the case if you are doing with FinTram Global. All right, coming on to the career opportunities. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, don't just think कि ACCA कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं बस अकाउंटिंग ही कर पाऊंगा। No, there are many career opportunities, and यहाँ तो मैंने briefly just थोड़ी डाली है, but there are many more. You can of course go to corporate finance. आप financial management पढ़ते हो in depth in ACCA, so of course उसका avenue आपके लिए open होता है। अब audit तो of course पढ़ते ही हो, audit is an option. आप treasury में काम कर सकते हो, आप taxation में of course काम कर सकते हो, risk and advisory, आप एक entrepreneur बन सकते हो। Pankaj sir is a life example. He is an entrepreneur. He is the one who started FinTram, right? आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी में जा सकते हो, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जा सकते हो, आप एजुकेशन फील्ड में भी जा सकते हो। लाइक मी, आई हैव चोजन द पाथ ऑफ नाउ टीचिंग ACCA. सो इट ऑल डिपेंड्स आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या प्रेफर होगा, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस, आई हैव डन ऑडिट, आई हैव डन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड नाउ आई एम डूइंग द एजुकेशन आल्सो। सो बिकॉज मैंने ACCA किया था, इट वाज इजी फॉर मी टू स्विच आल्सो। एंड like I have said earlier, आपको कुछ साल आप इंडिया में भी कर सकते हो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। I know so many of my colleagues are either working in UK or Ireland or Dubai, because these are the main places जहाँ ACCAs are very much in demand. So they work few years in India, then they move there, then आप वापस आके भी इंडिया में भी कर सकते हो, because इंडिया में भी सारी MNCs, सारे big fours and other companies also जो big four नहीं है but
बड़ी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फर्म्स है लाइक योर ग्रांट थॉर्टन, बीटीओ, ये सब जो हैं ECCAs को हायर करते हैं एंड एट द सेम लेवल एज CAs. लेट मी टेल यू दैट जब मैं अपनी कंपनी में थी, मैं एज एन ECCA जिस लेवल पे थी, मेरे साथ जो थे वो सब CAs थे. तो ऐसा नहीं है अगर आपको लग रहा है कि वो इंडिया में CA को ऊपर लेवल पे दिया जाएगा और ECCA जूनियर रहेगा, so ऐसा कुछ नहीं है. ECCAs are also promoted to managers, senior managers and everything. So you don't have to worry about that aspect. Now, जो companies hire करती हैं ACCA को, of course there are many companies, but I have just provided a list here. And अगर आपको और जानना है तो आप ACCA का अपना एक official job portal भी है जिसमें उनके जो approved employers है उनकी list है, कौन सी companies hire करती है, वो भी आप easily Google में आप बस लिख सकते हो ACCA job portal and you will be able to see all the job openings that are there at this point of time and the companies that hire ACCA. So of course, all your big fours hire ECCA, like I said, BDO ho gaya, Grant Thornton ho gaya, there's TCS, there's Shell, there's Genpact, there's Barclays, IBM, and many more. So all of these companies, they hire ECCAs, and in सारी companies का base global होता है, and ECCA में आप पढ़ते हो IFRS and all the international standards, so they prefer to hire actually ACCAs. Now coming on to FinTram Global. So do you want to take this? I thought you will take this, Disha. Okay, I'll only take this. All right. So FinTram Global is a leading learning platform, of course, transforming professionals around the world. We have students around the globe who we help, right from the registration, mentoring them, coaching them for ACCA. We are global learning providers, not just for ACCA, but also for US CPA, US CMA, IFRS, and various other CPE courses. We are, like I said, gold approved ACCA learning partners, but also for Becker, we are the approved channel partners. These are our, association, whether it's your Becker, Kaplan, when you study with us, you can see on our website also that we provide Kaplan ebooks and everything. Then we are also the preferred education partner with various renowned business schools and institutions. चाहे वो आपका XLRI हो गया, LIBA हो गया, EDII हो गया, CIMP हो गया. So इन सारी institutions के साथ हमारा एक partnership है, connection है. Our faculty pool is professionally qualified. Like I said, you will only see qualified accountants, chartered accountants, ACCA, CPA, CMAs teaching you all. And of course, these people also have a good experience, not just in teaching, but they have worked in various MNCs. So when you study, when you study and see our videos and courses, आप उनके जो life experiences हैं, उनसे भी काफी चीजें आप सीखते हो. Now, FinTram कैसे आपको support कर सकता है? Of course, जैसे कि we have said time and again, we are a gold approved ACCA learning partner. So अगर आप अपने आप से register करने जाओ, अपने आप से आप exemption करने जाओ, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो, like पैसे देने पड़ जाएंगे, चाहे वो registration fee हो गई या exemption fees हो गई. But because हम एक gold approved ACCA learning partners है, we are able to transfer these benefits to you. हम one stop solution है, whether it's for your registration, coaching, training students, mentoring them, and also placement. We have various tie-ups with various corporates जहाँ पे हम अपने students को, उनके resumes उनको भेजते हैं, and those corporates then of course interview and then take it forward from there. We of course provide an exam prize assurance. We have affordable fee structure and also special scholarship is there for all you students. At the end, we will give you a number to know more about the special scholarship. Do contact us. Our classes are 100% interactive, whether you take our live online classes or you want recorded classes. Maybe the faculty would, come weekly on Zoom, take classes to discuss any doubts that you have. We share WhatsApp numbers, email IDs of the faculties. So you are always in touch with your teacher and agar aapko koi bhi doubt hai, kuch bhi nahi samajh aa raha hai, you can just contact them. And of course, we have best faculty team committed to high passing results. Jaise ki maine kaha, only qualified people are there. उन्होंने either वो course किया है or they have the knowledge on accounting and all of that. Now, this is what students say about FinTram. We have so many students based, but of course we have just, put out some of the things which students have said and what they feel when they have studied with us, FinTram Global. So these are just some examples of that. Now, we will open up for any Q&A. If anybody has any query with regards to ACCA or in general with anything, जो भी हमने आज बात की,
feel free to ask. We shall go on the last slide. I think number is there. So if anybody wants to write there, they can, Yeah. And this is the number. You can, call or WhatsApp on this number to know more whether about the ACCA course, registration, ke wo bhai hum register karke wo exemptions kaise avail kare, or about the special scholarship also. So you can, of course, get in touch with the team and they will be happy to help. One thing that I would like to add on over here is, guys, that while we are discussing right now only for the BComs, whether it is BCom pursuing या BCom कर चुके हैं, but अगर आपके पास कुछ additional चीज है जो आपने करी हुई है, let's say आपने CA के कुछ पेपर्स दिए थे और CA का कोई ग्रुप क्लियर किया हुआ है, या CA में कुछ आप कर चुके हैं, या ICW में कर चुके हैं, या आपने कुछ MBA किया हुआ है, या कुछ भी अगर आपने ऐसा किया हुआ है, तो do reach out to us. We'll be more than happy to help you in terms of what more you can get in the form of exemptions from ACCA, so we can help you out there. So in case you are thinking of it, you can certainly reach out to us. There's a number being given over here. अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 11th में हैं और ACCA करने का सोचते हैं, तो भी आप हम तक पहुंच सकते हैं. We can really help you in terms of starting your journey, because earlier the better, right? If you'll start at the age of class 16, 17, at the age of 16, 17, then effectively you can target becoming an ACCA, by the age of 20. So, earlier is the best proposal or option that one can really look onto. अगर आप CA qualified हैं तो effectively आपको 9 exams exempt हो जाते हैं. तो you can of course reach out to us. There is a special scholarship program being available for the CA qualified students. So you can certainly reach out to us. We'll be more than happy to help you there too. I think we have a question in the chat. Tushar asks, ACCA or US CPA, which course is better? तुषार, ये सेम सवाल ना मेरे से अभी थोड़े दिन पहले एक फोरम में पूछा गया था, जहां पे ना मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि बेटा आपको कोक अच्छी लगती है, पेप्सी अच्छी लगती है. एंड some people said मुझे कोक अच्छी लगती है, some people said मुझे पेप्सी अच्छी लगती है. इसका आंसर भी बेटा बिल्कुल वैसे ही है कि it is entirely on you in terms of what you want to do and where you want to go. ACCA and CPA both are equally good courses, equally relevant and equally in demand. The only thing is ACCA is more in demand in Europe side of it, and CPA is more in demand in US and Canada side of it. Not that कि US Canada में ACCA नहीं चलेगा या Europe में CPA नहीं चलेगा, but the demand is more on that side of it. In US CPA you learn more of US gaps, in ACCA you learn more of IFRS, and so on and so forth. As far as the compensation or the growth path is concerned, both the qualifications are equally well recognized around the world. So there is nothing that I would say that this one is better than other. आपका गोल क्या है बेटे, आप क्या करना चाहते हो, किन कंपनीज में काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, वो डिफाइन करेगा आपको बेटा क्या करना है. The only thing I would add is कि एक इशू है जो डिफरेंशिएट करता है ACCA को CPA से, दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द क्वालिफिकेशन. ACCA बेटे आप स्टार्ट कर सकते हो जब आप क्लास 11th 12th में हो, और BCom में हो आप BCom के साथ कर सकते हो, BCom के बाद कर सकते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट जबकि CPA की क्वालिफिकेशन ये है कि बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है. जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक आप CPA को परस्यू ही नहीं कर सकते. तो टाइमिंग भी एक बड़ा एक ऐसा कंसर्न हो सकता है जो आपको कंसिडर करना पड़े फॉर मेकिंग द डिसीजन. सो बेसिस दैट यू कैन मेक योर डिसीजन तुषार, एंड यू कैन वर्क अराउंड. That helps, Tushar. Anybody else? Any questions? Disha, do you want to take up what is the salary of an ACCA member in cities like Gurgaon, Noida or Delhi? So again, guys, it would depend कि आप कौन सी company में कर रहे हो and whether you have past experience or not. But I would say starting salaries is I would say 4 to 6 lakh की range में होती है if you are a qualified ACCA. And अगर आप ACCA कर रहे हो as an affiliate भी आप job कर सकते हो. Like I was working in KPMG EY as an affiliate. And even before as an affiliate, like as a student also, जब मेरे पूरे papers नहीं clear हुए थे तब भी मैं इन companies में काम कर रही थी. Obviously तब salary अलग level पे थी. जब मेरे सारे papers clear हो गए तब मेरे को they recognize that and मेरी फिर salary भी बढ़ गई थी. And again when I became a member, then again salary बढ़ जाती है.
So different stages भी हैं, but you can expect starting, I would say, 4 to 6 lakhs per annum. But again, it will depend on आप कौन सी कंपनी में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, इन सब में भी फर्क पड़ता है. Like people say कि consulting pays a little more than audit. So ये सब depend करेगा on the various departments also. एक चीज बेटा मैं इसमें ऐड करूंगा, which is कि ACCA मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा कोर्स है बेटे जो आपको फुल्ली क्वालिफाइड होने से पहले जॉब दिला देता है. बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो बिग फोर्स में हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में हैं, कंसल्टिंग में हैं, और हम बहुत सारी कंपनीज के साथ काम भी करते हैं जहां पे हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर गेटिंग सीवीज. इनफैक्ट दिशा, यू नो दैट even right now we are looking forward for CVs which have cleared 9 exams, right? Yeah. So we need students जिन्होंने अपने 9 एग्जाम क्लियर कर लिए हो या स्किल लेवल क्लियर कर लिया हो, because there are companies who are looking forward to hiring those folks despite the fact कि अभी वो ACCA नहीं है, but क्योंकि उन्होंने first 9 एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं तो they want them to hire them and of course place them. And I'm talking about companies in Gurgaon, Noida and so on and so forth. उन्हें चाहिए 9 पेपर क्लियर करे हुए ACCA students. So that is the big advantage that ACCA as a qualification has. And once you qualify, then you can get absorbed, like Disha said, फिर increase भी मिलता है, promotion भी होती है. And when you become an ACCA member, your salary can somewhere touch between 8 to 10 lakhs and so on and so forth. Absolutely. Sir, I'm from art side. How can I do ACCA? There is no limitation to it. Even if you're from art side, you can start pursuing ACCA. Just reach out to us. Rohan will be more than happy to help you in your journey. Sir, BBA, MBA plus ACCA is a good combination. It's an excellent combination, Rashi. On the MBA side, you learn the management piece of it. And on the ACCA side, you learn the accounting and reporting piece of it, which is a deadly combination for any market is concerned. So you can target any market, any segment, any corporate per se, if you have a qualification like this. It's a very deadly combination. बहुत सारे ACCA qualified student भी बाद में जाके MBA करते हैं. And बहुत सारे MBA भी बाद में आके ACCA करते हैं या CPA करते हैं या CA करते हैं, depending upon what they really want to pursue. So it's an excellent mix, or I would say a combination. After how many years of gap can we pursue ACCA? Gap means what, Neil? I couldn't get that. After how many years of gap can we pursue ACCA? Gap, why are you saying gap? Thinking आपके college के बाद, so let's say you graduated, let's say 5 years back, you can still pursue ACCA. So that is not an issue if that's the gap you are referring to. Disha, do you want to take the next one? Can I go to UK? Can I go UK for doing job in big firms after clear ACCA? Of course, you can try. Of course, किसी भी country में जाने के लिए उनके अपने अलग rules, visa requirements, all of that is there. If you meet that, then that's great. But as such, ACCA is recognized widely in UK. So there are many openings and they do take people even from outside. अगर उनके if they are not able to meet the demand. And usually if you have few years of experience in your home country, it definitely becomes more easier to then transfer or go to any other country for job. In fact, आप ना बेटे एक चीज और ऑब्जर्व करोगे which is very prominent now in India is कि आप ACCA या कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन लेते हो and you start off a job with any big four or any good MNC. फिर क्योंकि उनका उन MNCs का कोई ना कोई एग्जिस्टेंस बाहर होता है, any company, any country for that matter, US में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, मिडल ईस्ट में भी हो सकता है, तो आपको एक इफेक्टिवली एज मिल जाती है इन कंट्रीज में जाने की, बिकॉज आपके पास एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन होती है जो आपको बहुत सारी इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए एलिजिबल कर देती है. So I was there in one of the seminar in a corporate in Pune just a few days back. And one of the things that they had was that they had a big time base in Europe. So what they wanted to do was that most of the जो jobs यूरोप में उनकी निकलती हैं वहां पे वो ACCA क्वालिफिकेशन मांगते हैं. अब क्योंकि इंडियन बीकॉम के पास या सीए के पास ACCA क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो वो उन क्वालिफिकेशन उन इंटरनल जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाता है, बिकॉज वो क्वालिफिकेशन से ही मात खा जाता है.
And if you have this kind of a qualification, which is an ACCA, it can really make you do wonders, because the aapka door khul jata hai to apply for those jobs, or then all that matter is your experience in the interview. So effectively, it's sort of a passport for you to really go into any country for that matter. Neil, to your point, is there any upper age limit for it? There is no upper age limit for it. Is ACCA in demand in New Zealand? You just go to Google Rashi and type ACCA jobs in New Zealand. You would have the answer right away in front of you. You will get to understand that, how prominent this qualification is and how relevant this qualification is as far as, these countries are concerned. Just go and type ACCA jobs in New Zealand. Answer will be there at yourself. Is BCom plus ACCA plus CFA is good combination? Mukund, क्या करेगा भाई? क्या करेगा भाई? BCom भी कर ली, ACCA भी कर ली, CFA भी कर ली, एक आधी क्वालिफिकेशन और लिख लेनी थी इसके साथ, और भी अच्छा लगता. बस भाई, एक BCom हो गई, उसके साथ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, इट इज ऑल द मोर गुड. देयर इज डिग्री कलेक्टर नहीं बनना है हमने वो डिग्री लेनी है जो डिग्री हमें कहीं पहुंचा दे मुकुंद, एंड दैट इज गोना बी मोर रेलेवेंट. तो बेटा इतना नहीं सोचना है, एक अच्छी डिग्री चुनो और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, एंड दैट इज गोना बी इट. उसके बाद नहीं सोचना बेटा. आप वैभव कहीं पे भी हो, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यू कैन डू ACCA विद FinTram राइट अवे, कोई इशू नहीं है. We have students in Australia, New Zealand, Middle East, Europe, US, Canada. We have students everywhere, who are pursuing ACCA with us. So, and with various other qualifications with us. So whenever you're going, whenever you're thinking of, do reach out to us. We'll be more than happy to help you. The number is there on the screen. You can note it down. You can reach out to us, WhatsApp us, and we'll be more than happy to help you out. Any questions, guys, anyone may have, I'm happy to answer. Even if there is anybody on YouTube who would want to answer any questions, ask any questions, please feel free, guys. We'll be more than happy to, help you. I have also, just put it up a link in the chat, guys. If anybody would want to, look out for a free lecture, of ACCA, a demo session, you can fill up the form, and we'll be more than happy to provide you, a demo session also on this. Any questions, guys, anyone may have? I know, we are just on time, but in the interest of, that you should get the best out of it, I'm giving the last few minutes if there is any question that anyone would want to ask. All right. Will I be late if I start ACCA at the age of 18? No, not at all, Rashi. 18 is not a late age. There are people who start ACCA in their 40s also, and even in 50s. So 18 is a great age to start ACCA. By the time you are 2021, you will finish ACCA. So it's a great age to start ACCA. It's definitely not even close to being late. Anything else, guys? Anyone has any questions? Anyone, any other question? Sir, you are on mute if you're saying something. All right. So we can, considering we do not have any question, we can wrap up, guys. All I would say towards the end, guys, that, if you are thinking of going global, ACCA is really a qualification to look forward to. And that is the reason, many
of the corporates are also looking forward for ACCA qualified candidates. So if you are really thinking about it and want to take your career to the next level, do not lose on time. Reach out to us. There are various benefits being available to the BCom students and to the CA students and to class 12 students. Reach out to us. We'll be more than happy to take your journey and of course take it to the level that you would want. Thank you very much for joining in, and thank you very much, Disha, for really taking our time. Thank you. Awesome. Thank you, everybody.